Hello everyone, welcome back to this channel and today we are in the year 1960. The day is 15th of March and as Mikhail Tal enters into the hall full of crowd and Mikhail Botvinnik waiting for his matchup, Tal sits in his chair and he realizes कि भाई आज का जो दिन है वो उनके पूरी जिंदगी का सबसे क्रिटिकल दिन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में इतने सैक्रिफाइस किए, इतने इंसेन गेम खेले, इतने इमॉर्टल्स क्रिएट किए हैं, which is of no use if he cannot prove in this tournament. This is the World Chess Championship. There is no use of like getting a 20 points out of 28 in candidates. No use of defeating Bobby Fischer 4 times. There is no use if you cannot prove it here. And this is where Tal is going to show why he's a world champion, how he became a world champion. This is the game one of the 1960 World Chess Championship, and Tal goes for the move e4. He likes the e4 business as he was famous in that. He was famous for his aggressive game. But Mikhail Botvinnik came well prepared. He said कि भाई मैं French defense में जाऊंगा और मुझे एक solid game चाहिए. Now this has to be doubled because this was an attack over here. And now bishop is spinning, so this is now really hanging. So Mikhail Tal decides to block the center over here. And now what Mikhail is going to do is what Botvinnik is going to do is मतलब इनका नाम भी मिखाइल ही है तो दोनों कंफ्यूज मत हो जाना. Botvinnik is going to do either is develop his knight, maybe this critical move c5 and then castle. Now what he's going to decide, let's see. He goes for the critical move c5 saying कि भाई जैसे बाजीराव मस्तानी का डायलॉग है कि भाई अगर मुगल सल्तनत की जड़ पे वार कर दो तो पूरी सल्तनत बिगड़ जाएगी. तो ये वही है कि सल्तनत की जड़ पे वार कर रहे हैं यहाँ पे. And now what Mikhail Tal is going to do is save his sultanate by asking bishop कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे. Either you are going to take this or you are going to move back. So यहाँ पर मिकाइल बॉटविनिक जो है वो डिसाइड करते हैं दो चीज़ें. सबसे फर्स्ट चीज़ कि मैं इस नाइट के लिए ये बिशप ट्रेड करके ये स्ट्रक्चर मिकाइल ताल को दूंगा. एंड आफ्टर दिस ही डिसाइड्स टू प्ले क्वीन c7 allowing Tal to go for this attack over here. And Tal, given an opportunity, will never miss an opportunity to attack such pieces. And now Mikhail Botvinnik is saying ki if you want so much that piece, I am not going to give you. I am going to attack your queen. You say, what? This is just en passant. The en passant, no, bro. Now your queen is under attack. You need to move your queen. And now, if suppose you move it to this square, this queen is going to get traded off. And now, after this trading, you are going to castle. And after some sort of development, you can see that black has a superior structure. You just cannot take this and take the three isolated pawn. That is just going to be bad for you. After these pieces get developed, you can see the black has superior structure. The root is very well protected, and white has done nothing to say that he's good. So this is not going to happen. What Mikhail Tal instead does is just moves back in this position to the g3 square. And now Mikhail Botvinnik look at the Mikhail Tal and said कि भाई आपको ये pawn से इतना क्या लगाव है, ले ले भाई. And now no one plays in world championship this kind of moves unless he is well prepared. So Mikhail Tal just given an opportunity, कभी छोड़ेंगे नहीं. He is a hungry man. So he just takes it. And now Botvinnik says कि भाई मैं अटैक कर रहा हूँ क्वीन के ऊपर. But Mikhail says I can see one more food over here and I grab the food. So now Mikhail take this another pawn. So Mikhail is up 2 pawns. What is the big idea of Mikhail Botvinnik? The idea is maybe your queen is placed, मतलब not very well placed over here. कि ये बहुत गलत जगह पे, इसको गेम में आने के लिए 2 मूव्स लगेंगे कि ऐसे चेक करके कुछ यहाँ पर आ जाए. 2 मूव्स लगेंगे इसको आने के लिए. दिस पीसेस आर नॉट वेल डेवलप्ड. एंड ये जो किंग है, ये एंड दिस रुक, किंग एंड दिस रुक आर इन अ फोकेबल स्क्वायर if I take this pawn. And this is what happened in game. And now Mikhail Tal here needs to calculate some stuff that knight g2 e2 works best for him because there are 2 moves, either this or this. This is non-critical because after this you can just take this and you are gaining whole center. This is not hanging because this knight is protecting it. So this is not very critical. The most critical thing is Mikhail needs to calculate this stuff over here. After this, h4 is the best move. Queen takes the center, eyeing this, pinning this knight to the king. Now Tal develops the bishop saying कि भाई mate in 1 है. Now Botvinnik is going to avoid that mate by developing his knight, and this is slow because my processor just started working and वो fan नहीं के चल जाता, उसके वजह से ये थोड़ा सा move slow गया. And after this queen is attacked, queen needs to move back, queen goes to c7, and after that just rook comes and yeah ऐसा नहीं करेगा rook.
बट रुक्स कम टू अटैक गेट दिस सेमी ओपन फाइल कि अगर ये पॉन कहीं से चला गया तो ये ओपन फाइल हो जाएगा। एंड द रुक आइडिया इज दिस कि भाई रुक डेवलप हो चुका है एंड ये वाला रुक जो है वो आएगा ऐसे डुमक के, राइट। ये रुक का आइडिया वही है, ये जो विश्वनाथन आनंद सर ने जो स्टाइल बनाया था रुक अपलिफ्ट करने का, ये मिकाइल साल बहुत पहले ही कर चुके। सो आफ्टर बिशप डेवलप्स देखिए अपलिफ्ट हो गया एंड नाउ बॉटविनिक इज गोइंग टू गो फॉर सेंटर ब्रेक, बट दिस इज मिकाइल थाल थोड़ी ना बच्चे की वो सुनेंगे ऐसी। तो नाउ दिस इज अ चेक, you somehow if you try to avoid this with a knight, after that Mikhail Tal is going to take this, your this pawn is hanging, this attack is going to come on a queen, so you need to maintain your central structure, so this bishop will protect everything. Now Mikhail Tal is going to take the center pawn, and if you take with a knight you say that this is hanging and now queen attack, मिकाइल साल का नाइट अटैक करेगा क्वीन के ऊपर एंड आफ्टर दिस चेक जस्ट C3 एंड ये पोजीशन आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्या मूव्स हो रहे हैं एंड या दिस इज लाइक क्या मूव्स हो रहे यही है, क्योंकि दिस आर ऑल स्टॉक फिश लाइन एंड ये गेम उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द बेस्ट मूव्स एंड मिकाइल साल डजंट गो फॉर दैट. Mikhail Tal is normal human. He just goes for what look human is king to D1. And this courageous move takes an heart of Mikhail Tal. This move can be played only within heart of Mikhail Tal, that king को पूरा सेंटर में ऐसा ओपन रख दो. एंड नाउ व्हाट इज द आइडिया कि भाई ये आइडिया तो सिंपल है कि अब ये फोर किंग स्क्वायर पे नहीं है, राइट. सो आफ्टर दिस व्हाट बॉटविनिक डज इज ओके, ही नीड्स टू डेवलप, उनको और पीसेस चाहिए अटैक करने के लिए. क्वीन तो अभी फिलहाल अनप्लेस्ड है. सो मिकाइल ताल ने बोला कि इसको थोड़ा अच्छी जगह पे मैं प्लेस करता हूँ. अब वही जो आइडिया है कि नाइट को यहाँ से लेके आ गए, ये थोड़ा सा पिन कर दिया बट इसको प्रोटेक्टेड है ये नाइट, विच इज नॉट बैड. And now this knight develops again same idea. This is under attack. You need to move this. So if you go here, there is nothing right now, and you cannot move your queen also. So Mikhail Botvinnik ने बोला कि भाई ठीक है ये ले ही ले pawn. And now Mikhail had kind of this structure which has मतलब center उनको मिल गया. अगर ये यहाँ पे पूछोगे तो सोचो क्या ही strong center होगा. So he got this. But what is the idea कि इन्होंने ऐसे pawn sacrifice क्यों कर दिया बीच में. So this is the idea कि अब king को move करो and I am gonna grab this central pawn which ठीक है मेरी क्वीन बाद में मूव होगी पर मेरे को सेंटर पॉन मिला, मैं तेरे को प्रेशर बिल्ड करूंगा. एंड द बेस्ट थिंग टू बिल्ड अ प्रेशर इज टू डेवलप योर पीसेस. सो अब ये मिकाइल ताल का मूव था तो उन्होंने क्या किया, वो बोले कि मुझे पता है तू ये नाइट डेवलप करेगा एंड कासल करनी यहीं पर जाएगा, तो मैं पहले ही तेरे कासलिंग के गेट बंद कर रहा हूँ. एंड दिस इज व्हाट मिकाइल डज इन इज बेस्ट. आपको पता चलेगा क्यों वो इंपॉर्टेंट है. नाउ नाइट हैज बीन डेवलप्ड and queen is asked to move back to his home. So queen is now moving back saying कि ठीक है भाई अताल सर आपने बोला कि ठीक है जाना है. And after this bishop is never going to move out of this square. और किसका बाप आके इस बिशप को रोकेगा, कोई नहीं. So now this queen needs to move because ये queen यहाँ पे कर क्या रही है, right? So बस queen को move करना ही है तो थोड़ा अच्छे से मूव करेंगे ना. अब यहाँ पे बॉटविनिक ने क्या किया, सेंट्रल ब्रेक किया. सोचे कि भाई कहीं से ये करूँ, कहीं से मैं वो ला, ये पीसेस वगैरह लाओ, इसको इन एक्शन लाओ इनको, तो कुछ ना कुछ हो जाए. तो दिस इज व्हाट ही वाज थिंकिंग एंड मिखाइल था वाज थिंकिंग कि भाई मैं कैसे रुक्स को ये सेंट्रलाइज कर दूं यहाँ पे. क्योंकि ठीक है आप क्या सोच रहे हो, ये नाइट से लूंगा तो ये नाइट से लूंगा, अब ये नाइट से ठीक है ये नाइट से लूंगा, मैं ऐसे लूंगा एंड मेरा ये रुक आ ही रहा है यहाँ पे, सेंट्रल अटैक करने के लिए आ रहा है. सो भाई ये तो पीसेस बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं मिकाइल ताल के, पर क्या ये सक्सेसफुल कर पाएंगे ये अब हम देखेंगे. तो बॉटविनिक हियर गोज फॉर कि भाई मेरे को नाइट मूव करना है तो ये पिन एंगल मेरे को नहीं चाहिए, तो ये सब इन्होंने ये मूव खेला. एंड आफ्टर दिस मिकाइल जस्ट टेक्स द सेंटर पॉन क्योंकि क्यों ना ले वो अच्छा है. सो आफ्टर दिस बॉटविनिक टेक्स विद दिस नाइट एंड आफ्टर दिस जैसे मिकाइल ताल का प्लान था कि भाई ये इनको ये करना है तो ये पिन करना है, पिन से हट गए. आफ्टर दिस रुक हैज बीन डेवलप्ड. द आइडिया इज कि भाई आपका दोनों ये एक ही लाइन में है, क्या ये हैंग कर दोगे आप. एंड मिकाइल बॉटविनिक शोज दैट ही इज अ ग्रैंड मास्टर, ही इज प्लेइंग वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप. ये ऐसा ये पिन तो हैंग नहीं करने वाले. अब आफ्टर दिस इज द थ्रेट, देयर आर मेनी थ्रेट्स एक्चुअली हियर. सो इन्होंने पहले क्या किया कि नाइट को डेवलप किया सेइंग कि डू यू वांट टू ट्रेड इट. So Botvinnik says, not so early. I am gonna just defend everything here. Everything is defended twice. You just cannot do anything. नहीं है यहाँ पे कुछ फिलहाल तो. आफ्टर दिस सो मिकाइल ताल सेज कि ठीक है कुछ दिख नहीं रहा ना तो मैं कन्वर्ट करूंगा कुछ दिखाने के लिए. अब ये बिशप को मूव करना पड़ेगा. बिशप द ओनली स्क्वायर इज दिस, तो बिशप मूव्स हियर. यहाँ पर भी मूव कर सकता है बट व्हाट इज द सेंस ऑफ दैट बिशप देन. तो उन्होंने क्या किया आफ्टर दिस मूव, ये वहां पर मूव किया. ओके everything looks good, there is nothing bad up till now, right? So what Mikhail played is कि अब यहाँ पे queen का कुछ काम नहीं तो queen यहाँ पर आने वाली है. And after this as soon as this queen moves here
बॉटविनिक सेज कि भाई बहुत हो गया यार, मेरे को ये बहुत ही क्रिटिकल लग रहा है पोजीशन, मैं सब ट्रेड मारूंगा. सो आफ्टर दिस नाइट टेक्स, दिस rook takes the knight. After that, this rook is under attack, so rook moves back. Rook takes rook, and now Mikhail doesn't take with the bishop, he takes with the pawn because उनको ये pressure build करवाना ही है यहाँ पे. And after this, he plays king b7, king c7. And now here Mikhail Tal plays a move which shows the class of him, which shows how good you are at chess. To understand this, what is the move you can suggest here that Mikhail Tal played? The move here is, I'm gonna give you understanding for people who are like under 1300, 1200. You can see these two pieces, right? These two pieces are on light square. If somehow my bishop comes in this diagonal, okay, so queen needs to move, right? And I am gonna get a rook for a bishop, right? But where am I gonna put this bishop? Yeah, this. So this is how you think at chess. If I push this pawn, which has happened in this game, and now if he takes it, which happened in the game, this bishop takes this pawn, and now this bishop is protected by this rook, so queen cannot take it. Now queen has to move back, and this rook will be taken. Now the question is, this happened in the game, but why did Botvinnik fall for this? Why didn't he just not take it and play something like suppose king b7, right? So suppose, or if that happened, then Mikhail is going to take that pawn. Now you need to move your bishop back. Once the bishop moves back, a4, and now this position, like, there is no good moves here. So what Stockfish suggests is the top move is queen g7. I don't know for what reason, but then just a5 after takes. Queen is gonna give a check over here. After that, this push just trying to restrict the squares for the king. And यू मतलब यहाँ पे तो देखिए पीसेस तो दहीहंडी खेल रहे थे, तो इस दहीहंडी को तोड़ने के लिए भाई नाइट आगे बढ़ चुका है कि कुछ तो करो भाई. After this bishop is gonna be traded, and after this attack, this queen is gonna come over here. This rook is going to go down to give a check, but there is nothing good over here. After this, he's hanging his own knight, and the stockfish is just unknowingly, I don't know what his idea for stockfish is. So this is what not happened in the game, but this would happen if he would have not, he would have just not taken it. So what he does is he takes and says, Mikhail Talki, just go for it and just kill me. And after this move, Mikhail Tal says, Ki, okay, you gave me chance and I am gonna show you how to finish the game off in a style. Now this is a pin, this pawn is moving up, so initially the knight hanging है, तो knight को protect किया गया. But then just at 6, and Mikhail Botvinnik resigned in this position because there is nothing you can do, because this pawn is gonna queen in very few moves. So how is he gonna queen? Let's suppose this move, and now you're trying to protect it. Queen is gonna come and attack this knight and sacrifice itself for that knight, and new queen is going to be generated. Suppose this move. Okay, so you wanna sacrifice in the style of Tal. Queen takes, and you are gonna develop another queen, and you are up a rook and easily winning this endgame. So this is why Mikhail Botvinnik resigned. I hope you love this video. I hope I made it justice to Mikhail Tal's game. And if you want to see more videos about how Mikhail Tal won this World Chess Championship in the year 1960, just comment down and I will show you the whole series. I would love to show you the whole series, and I might grow as an YouTuber. I might grow as a content creator. I am still not that a good of a chess player, but I am still learning these things. Okay, so for me, I hope you will just support me in this journey. I just need to complete 100 subs very soon right now in before this 31st of Jan, so that I have some ideas of doing some stuff with people's, give some kind of donations and all. Oh, that is a different part. We are not going to discuss that in this video, but I hope you will support me in this channel. I hope you love this video. You will share this video to all the people who watch us chess. Subscribe to this channel and keep supporting, guys. Love you. Until the next video. Kalji ka bhavan no.